Good morning, students. Today we are going to discuss short answer questions of chapter Animals, Habitat and Adaptation. Okay, so let's start with question number 1. What happens when the conditions do not remain suitable for an animal species? So in this you have to tell what happened, how it affect an animal when the condition is not suitable for them. Answer: when living conditions do not remain suitable for an animal species, the whole group dies out and become extinct. So, whenever the living condition is not suitable for any animal species, okay, so that whole group it extinct or it dies out. For example, dinosaur is an extinct species. Extinct means that no longer exist in this planet, on this planet. तो आपको पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आपकी जो भी कंडीशंस है वो सूटेबल नहीं है तो कोई भी एनिमल स्पीसीज के साथ क्या होगा. तो आपका आंसर है कि अगर कोई लिविंग कंडीशन अगर सूटेबल नहीं है, ठीक है, किसी भी एनिमल स्पीसीज के लिए, तो उनका पूरा ग्रुप जो है वो मर जाएगा और एक्सटिंक्ट हो जाएगा. एक्सटिंक्ट का मतलब है कि वो अब और इस धरती पे नहीं है, जैसे कि डायनासोर जो कि अब इस धरती पे नहीं है, ठीक है, वो एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है. क्वेश्चन नंबर 2. हु आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स? So in this you have to define what are terrestrial animals, who are terrestrial animals. Answer: animals that live on land are called terrestrial animals. For example, tiger, cow, etc. So those animals which live on land, that means land animals, they are called terrestrial animals. So we human also are example of terrestrial animals because we live on land. Other examples are tiger, cow, and you can also think of many other examples that you see in your surrounding. For example, cat, dog, okay, buffalo, they all are terrestrial animals. तो आपको बताना है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं, कौन होते हैं. तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो होते हैं जो कि धरती पे, लैंड पे रहते हैं, ठीक है, उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाता है. जैसे कि टाइगर है, काऊ है, और भी हम इंसान जो है वो भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है. क्यों? क्योंकि हम भी धरती पे, लैंड पे रहते हैं. आप अपनी तरफ से और भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में सोच सकते हो जो आप अपने आसपास देखते हो, जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, ये सब भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है. थर्ड है, हाउ डू फिश ब्रीथ? सो वी ह्यूमंस आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड वी ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ अवर लंग्स. But fish, which is an aquatic animals, in this question you have to tell how do a fish breathe. So answer is fish breathe with their gills. They can live in water, okay, and with the help of a organ, the name of that organ is gills. They breathe with the help of their gills, okay, that's why they can live in water, and we don't have gills, we have lungs, that's why we cannot breathe in the water. तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि मछली कैसे सांस लेती है. तो मछलियाँ जो है उनके पास गिल्स होता है, गिल्स की मदद से वो मछलियाँ सांस ले पाती है. मछली जो है वो एक एक्वाटिक एनिमल है, पानी में रहने वाला जीव है, तो उनके पास गिल्स होता है, इसलिए वो पानी में सांस ले पाती है. बट हम इंसान एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है और हमारे पास गिल्स नहीं होते, लंग्स होते हैं, इसलिए हम धरती पे रहते हैं और पानी में हम सांस नहीं ले पाते, ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन इज हु आर कार्निवोरस? गिव एग्जाम्पल. आंसर: flesh eating animals are called carnivorous. For example, tiger, lion, etc. So in this you have to define
who are carnivorous animals, and you have to give examples also. So an animal that eat other animal by killing it, okay, and it eat the flesh of other animal, they are called carnivorous animals, okay. Carnivorous animals like tiger, lion, okay, so they have very sharp teeth so that they can tear the flesh of other animals and they can eat them, okay. So it is the carnivorous animal. Moving on to question number 5. Name an adaptation that protects an animal. So in this we have studied about adaptations to protection. So from that you have to give one example, okay. So I have written camouflage is an adaptation that protects an animal. Camouflage helps animal to hide from the predators. So camouflage is an adaptation which protect an animal, okay, from its enemies. Camouflage, do you remember what is camouflage? Yes, it is the ability of an animal with the help of which it can just merge with its surrounding, okay, by changing color or the pattern on their body, and it helps them to just merge with its surrounding. For example, a chameleon is show camouflage. And camouflage, which is an adaptation, it helps animals to hide from their predators. So we can't see them easily, okay. For example, chameleon, it can change its color and can mix up with the surrounding, so we cannot see it, and it help them to hide from their predators, okay. From their predators. तो कैमोफ्लाज आपको 5th क्वेश्चन में बताना है कि एक एडेप्टेशन बताइए जिससे जानवर अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं, प्रोटेक्ट कर पाते हैं. तो हमने बहुत सारे पढ़े थे एडेप्टेशंस टू प्रोटेक्शन में. मैंने यहाँ पे कैमोफ्लाज का एग्जांपल दिया है. कैमोफ्लाज एक एडेप्टेशन है जिससे जानवर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. कैमोफ्लाज में जो है जानवर हाइड जाते हैं, छुप सकते हैं, छुपने में मदद करते हैं. किससे छुपने में? प्रेडेटर्स से. प्रेडेटर्स का मतलब जो उनका शिकारी होता है, जो उनको खाने आ रहा है, उनसे छुप के रहने में कैमोफ्लाज जो है एक एडेप्टेशन हेल्प करता है. तो कैमोफ्लाज क्या आपको याद है क्या होता है? जी हाँ, कैमोफ्लाज का मतलब जब एक एनिमल अपने आप को बिल्कुल मिक्सअप कर ले अपने सराउंडिंग से, उसको कहते हैं कैमोफ्लाज. तो ये कैसे भी कर सकता है, कलर चेंज करके कर सकता है, अपने पैटर्न्स की वजह से कर सकता है, या कोई स्ट्रिप वगैरह होती है उनकी बॉडी पे जो पैटर्न होते हैं, मार्क्स होते हैं, उनकी हेल्प से भी कर सकता है. जैसे कि एक गिरगिट, वो अपना कलर चेंज कर लेता है और बिल्कुल वैसे कलर का हो जाता है जैसे उसके आसपास की सराउंडिंग है. ऐसे वो दूसरे प्रेडेटर्स यानी कि शिकारी से छुप के रहता है और उसकी सेफ्टी प्रोटेक्शन हो जाती है. ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड पार्ट ई इन विच वी हैव डिस्कस्ड टोटल 5 क्वेश्चंस. I hope you understood today's class. Thank you so much. Have a nice day and bye.